Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life with Dr. Muhammad Yusuf. Today I am going to talk about the accommodation of eye, but as per routine, one ayah from Holy Quran. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. वमा दिल हयात दुनिया इल्ला लहव लईब, ये दुनिया की जिंदगी तो बस एक खेल तमाशा है। दुनिया की ये जिंदगानी तो महज खेल तमाशा है। वइन दारल आखिरत लहियल हवान, और असली हकीकी जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। हमारा असली ठिकाना, जो असली जिंदगी है, वो मरने के बाद वाली जिंदगी है, हमेशा की कामयाबी और हमेशा की नाकामी। ये दुनिया तो बस उसके मुकाबले में एक खेल तमाशा है। और लव कानू यालमून, काश ये बात समझते होते तो अल्लाह पाक हमें समझे उस असली घर के तैयारी की हमें तौफीक अता फरमाए। दुनिया इसलिए कीमती है कि इसमें हमने असली घर की तैयारी करनी है, इसको हमने असल नहीं समझना, ये खेल तमाशा। अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए। So we are going to talk about accommodation of eye. What is accommodation? Lens system of the eye can adjust its total refractive power to focus the far objects as well as the near objects, as we have seen in the optics of vision. That is, far objects means the light rays coming from the single point of source of light are almost parallel. Parallel light rays are focused by the lens and minimum power. And when the light rays become diverging, they require more powerful to be focused on the same distance. So eye has got the ability to adjust its total refractive power according to the distance. For far objects, there is minimum refractive power. We are going to see how much is the total refractive power of the eye. Minimum refractive power. And when we want to look at the nearer objects, automatically, reflexly, there is increase in the refractive power, and we can see the nearer objects as well. We can increase the refractive power. Or I should say, it is increased. We can. It is not voluntary. It is involuntary mechanism. So refractive power is increased when we try to look at nearer objects. So this is known as accommodation of eye. So the refractive power is increased for near vision. What is important? When we look at the far objects, it is the minimum refractive power without any active process. The refractive power of the lens system of the eye is 59 diopter. अभी बोल देता हूँ, आगे आ रहा है. Refractive power of the lens system of the eye minimum is 59 diopter, normal eye. When we look at the nearer objects, it can increase above 60, 61. आगे देखते हैं. So this refractive power will increase when we look at the near object. This is known as accommodation. Lens system of the eye comprises of, पहले भी यहाँ कहीं जिक्र किया है, it comprises of 4 interfaces. That is, light enters from air to cornea, one interface, cornea to echosumer, second interface, echosumer to anterior surface of the lens, third interface, and posterior surface of the lens and the vitreous humor. So these are the 4 interfaces where the refraction of the light is possible. So light is passing through all these media and the light will be refracted. Total refractive power of these surfaces, these interfaces. There are 4 interfaces. One is the air and anterior surface of the cornea, and the posterior surface of the cornea, aqueous humor, and the anterior surface of the lens, and the posterior surface of the lens and the vitreous humor. Then the refractive indices of the media. Refraction, as we discussed in optics of vision, refraction depends upon the difference between the refractive indices as well as on the curvature of the interface. So refractive indices of the air is 1, and that of the cornea is 1.38, and
aqueous humor has got 1.33 and the lens has got 1.4. There is some, this should be here. You can see, an important thing, you can see maximum difference in the refractive indices is this interface, air and anterior surface of the cornea. Air and cornea, the difference is 0.38. While from the cornea to aqueous humor, the posterior cornea to aqueous humor, it is 1.38, it is 1.33, 0.05. And between the aqueous humor and the lens, that is 0.07. So maximum refractive index difference in the two media at the interface is this first interface, air and cornea. That's why maximum refractive power is provided by the anterior surface of the cornea, because there is maximum refractive index plus there is maximum curvature as well. दोनों factor यहाँ पे maximum है. So refractive index यहाँ से नजर आ रहे हैं. Now the reduced eye. What is reduced eye? These are the four interfaces on which light passes and refraction occurs. If we consider all these four interfaces as one lens, so that imaginary eye will be reduced eye. That is known as reduced eye. These are the four interfaces. This is the anterior surface of the cornea, 1.38 to 1. That is maximum differences here. And the difference between the cornea and as a 0.05 and here is 0.07 and here is 0.06. So maximum differences here of difference of refractive indices of the two media, जहाँ पे रिफ्रैक्शन होनी है मैक्सिमम यहाँ पे है. सो मैक्सिमम रिफ्रैक्शन विल अकर. दूसरी बात हम देख लें, मैक्सिमम कर्वेचर भी आल्सो इज देयर. लेंस का कर्वेचर उतना नहीं है, एंटीरियर और पोस्टीरियर सर्फेस दोनों को देख लें. कॉर्निया इज मैक्सिमली कर्व्ड. So the refractive power, maximum refractive power is provided by the anterior surface of the cornea. जो वो 59 डायप्टर हमने बोले हैं ना, उसमें से 40 डायप्टर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कॉर्निया. बाकी 20 डायप्टर्स वो जितने भी रह गए 19 डायप्टर्स. So 40 diopters are provided by the anterior surface of the cornea because of both of these two reasons. There is maximum difference in the refractive indices of the two media and there is maximum curvature, angulation at the interface. Light की रेस को angulation जो मिलती है, curved surface जो मिलती है, वो वहाँ पे मिलती है. So this, if we consider all these interfaces as one lens, which has got the refractive power of 59 diopters, in सब की calculate करें तो 59 diopters comes to be the lens system of the eye. The number of the refractive indices हमने बात कर लिया है. So this will be a reduced eye जिसकी हम सारे सर्विसेज को मिलाकर एक तस्वर कर लें, एक लेंस हम तस्वर कर लें 59 diopter वाला, जिसकी रिफ्रैक्टिव पावर बढ़ेगी कम होगी, एकोमोडेशन हम डिस्कस करेंगे. रिफ्रैक्टिव पावर इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बिकॉज ऑफ द चेंज इन द कर्वेचर ऑफ दिस लेंस. है तो वो लेंस की तब्दीली आती है, कॉर्निया में कोई तब्दीली नहीं आती, लेंस की कर्वेचर चेंज होता है. लेकिन टोटल रिफ्रैक्टिव पावर 59 डायप्टर हम बात करते हैं, उस वो बढ़ती है 59 से 60 हो जाए, 61, 62 और 74 तक जितनी भी हो जाती है, आगे हम बात करते हैं. Lens system of the eye, total refractive power of the lens system of the eye, all the interfaces, that is 59 diopters. And maximum refraction occurs at the cornea, as I said, it is 40 diopters, about 40 diopters. And the maximum difference between the refractive indices is air and cornea, as I have explained, it is 0.38. और आगे हम देखेंगे तो वो कम है, 0.05 है, 0.07 है, like that. So maximum angulation is also at the anterior surface of the cornea, and that's why the total disc provides the maximum refractive power. Refractive power of the lens in the eye is only 20 diopters. तो कितना हो गया, 60 डायप्टर्स हो गया. अगर मैं वापस जाता हूं तरह सा समझाने के लिए, इसकी अगर रिफ्रैक्टिव पावर कॉर्निया की 40 है एंड लेंस की 20 है, 60 हो गया. पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया इज कनकेव,
थोड़ी सी कनकेव भी है, वो -1 वो कर लें 59 डायोप्टर। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया आप देखें ना कनकेव है, तो उससे लाइट गुजरती हुई दूसरी तरफ पे रिफ्लेक्ट होती है, कर्वेचर। सो बस आपने याद कितना रखना है कि मैक्सिमम रिफ्लेक्शन अकर्स एट द कॉर्निया एंड दी टोटल रिफ्रैक्टिव पावर, लेंस की रिफ्रैक्टिव पावर अपनी जो है रिलैक्स कंडीशन में, व्हेन द आई इज accommodated for the far vision, there is no tension on the ligaments। वो आगे हम देखते हैं which ligaments, ligament का जिक्र आ गया। There is no contraction of the ciliary muscle, completely relaxed lens system of the eye में refractive power is 59 diopter, 20 diopter आप लेंस की कह लें। But lens is the most important in that it is responsible for the accommodation. It is responsible for increase in the refractive power. Cornea को तो कुछ नहीं हो सकता, lens can change its shape, also that's important in the accommodation system of the eye. Accommodation power. Parallel light rays from the far objects are focused on the retina by this 59 diopters. ये हम हमारा क्या हो गया, बयानिया आ गया। that is 59 far vision के लिए 59 diopter, this eye is capable of focusing the light rays on the retina. Okay, this is the lens system of the eye. The light from the nearer objects, जब हम करीब आएंगे, जब तक पैरेलल है they will be focused on the retina, but when they become divergent, करीब वाली चीज की light rays they become diverging on the करीब वाली diverging light rays, when they become diverging light rays, they require more powerful lens to focus at the same point. इसको रेटिना पर फोकस करना है। अगर डाइवर्जिंग लाइट रेज हैं, अगर कुछ भी ना हो तो 59 डायोप्टर पे ये रेटिना के पीछे जाके कहीं फोकस होंगी, क्योंकि इन्होंने तो फोकल पॉइंट उतरा ही नहीं। पैरेलल लाइट रेज हैं तो फोकल पॉइंट पे फोकस होंगी, अगर डाइवर्जिंग हो गई, अगर फिक्स लेंथ है, डाइवर्जिंग होंगे तो फोकल पॉइंट से दूर जाके कहीं फोकस होंगी, तो then it will not be visible clearly, sharply visible नहीं होगा, फास्ट फोकस नहीं होगी। So diverging light rays they require more powerful lens, so refractive power of the crystalline lens वो 20, वो जो लेंस है जिसको हम लेंस बोलते हैं, नट लेंस सिस्टम, हम चारों पांच सर्विसेज को मिलाकर हम लेंस सिस्टम बोल रहे हैं। सिर्फ लेंस का लफ्ज जब बोलेंगे that mean that crystalline lens, so refractive power of the crystalline lens can be increased from this 20 diopter to 34 डायोप्टर्स। 20 डायोप्टर उसकी रिलैक्सिंग कंडीशन में है, लेकिन इट कैन assume more globular, more spherical shape, so its refractive power can increase maximum up to 34 diopters. कितना ऐड हुआ? 14 डायोप्टर। तो देयर इज दिस एक्स्ट्रा 14 डायोप्टर जो ऐड कर सकते हैं, दिस इज नोन एज accommodation power. Our lens system of the eye, young eye, has got the accommodation power of 14 diopters. Okay, क्या मतलब हुआ? 59 से 14 डायोप्टर ऐड करेंगे तो इट विल बी 73 डायोप्टर, 74 डायोप्टर्स हो जाएंगे। तो 14 डायोप्टर जो ऐड हो रहे हैं, दैट इज द accommodation power। ये यंग आई की बात है। बूढ़े लोगों में दिस बिकम्स रिफ्रैक्टिव पावर इज रिड्यूस्ड। ये 14 डायोप्टर नहीं रहते, 10 हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। ये लेंस में वो एबिलिटी खत्म हो जाती है विद ओल्ड एज, डिनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन की वजह से। आगे हम बात करेंगे। सो दिस इज रिफ्रैक्टिव पावर, accommodation power. More powerful lens is required to focus the nearer objects. ये डायग्राम पहले भी मैंने दिखाई हुई है। This is a lens. It has got the focal point somewhere. ये light rays from the distant object, they are parallel, they are being focused here. But if it is point source of the light is not far, it is near, light rays become diverging light rays, so they will be focused by this lens far behind the actual focal point. If the retina is here, तो ये तो फोकस नहीं होगा। So इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसके लिए we will have to use more powerful lens system. More powerful lens system Allah has provided in the form of change in the shape of the crystalline lens. वैसे तो कैमरे के लिए तो हम दूसरा बड़ा पावरफुल लेंस लगा लेंगे ऐसे के लिए, जब फोटोग्राफर को अभी के देखा होगा, ठीक चेंज करते रहते हैं लेंस,
लेकिन Allah has provided this system, that is lens powerful of the lens. This is the total power. So it says the lens system of the eye has this much power. ये retina यहाँ पे है. अगर if the nearer objects are to be seen, then the retina remains here. So we need a powerful lens like this so that the images again diverging light rays are also focused on the same point. That is retina. So this is accommodation. What happens हमारी accommodation में normal refractive power of the 59 is increased. Maximum increase can occur up to 14 diopters. Add हो जाएंगे 60 में add करें 74 diopters or 73 diopters. That is accommodation. ऐसे होता है. Now we are going to see how this mechanism. What is the mechanism of this accommodation? Lens consists of transparent elastic fibers. पहली बात, elastic fiber. Elastic capsule. Lens is proteinous matter, transparent proteins हैं, and it has got the elastic capsule that is filled with the transparent proteinaceous fluid. Fluid वो प्रोटीन से भरा हुआ fluid है, semi solid semi fluid किस्म की चीज है. That is, और लेंस के जो structure है, that is elastic capsule. Now this lens, it is in a completely relaxed state. Lens becomes almost spherical, a transparent ball. Completely relaxed state कब होगा? लेंस को आई से निकाल लें. फर्ज करें लेंस को आई के काट के, it is suspended by suspensory ligaments in the eye. उसको अगर वहां से निकाल लें काट के, because of elasticity of its capsule, it is exactly a ball, small ball. एक बॉल, ट्रांसपेरेंट बॉल की शक्ल इख्तियार कर जाता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इलास्टिसिटी. इसको तो लिगामेंट्स ने खींच के लेंस, बाई कन्वेक्स लेंस जैसे हमने डायग्राम में देखा था, बाई कन्वेक्स लेंस ऑलमोस्ट नजर आ रहा था. वो किस लिए था? बिकॉज इट इज बीइंग, दिस इज इलास्टिक बॉल, इट इज बीइंग पुल्ड बाय द लिगामेंट्स डाउनवर्ड अपवर्ड अराउंड द लेंस, चारों तरफ से सर्कमफ्रेंस पे. इट इज बीइंग पुल्ड बाय द लिगामेंट्स एंड इट इज अ बाई कन्वेक्स लेंस. जैसे आपने बाई कन्वेक्स लेंस देखे होंगे, बाई कन्वेक्स लेंस. लेकिन अगर इसको फ्री छोड़ दे, सारी लिगामेंट काट दे, बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिसिटी इट अज्यूम्स ऑफ ऑलमोस्ट अ स्फेरिकल बॉल, ट्रांसपेरेंट बॉल बन जाता है. There are 70 ligaments, suspensory ligaments they are known as, which are attached at the periphery, connecting the lens to the ciliary muscles. ये लेंस है, इसके periphery में ligament लगे हुए हैं जो ऐसे structure of the eye है, ये ऐसे suspended है और इसके ligaments they are pulling it toward the ciliary muscle. That's why it is biconvex. वरना ये बाल है, इसको इन्होंने suspensory ligament ने ऐसे खींच के बनाया हुआ this biconvex lens. So periphery. So these ligaments are readily arranged and they are collectively known as zonules. इनको zonule बोलते हैं, सारे ligaments is attached. Now the ligaments are pulling the capsule toward the periphery. ये बात क्लियर होगी, मैंने बयान कर दी. टेंशन इन द लिगामेंट्स कीप्स द लेंस रिलेटिवली फ्लैट. वो गोल नहीं है, इस पे कुछ टेंशन मौजूद है, ये बंधा हुआ है. बंधने की वजह से इट इज अ बाइकन्वेक्स लेंस, रिलेटिवली फ्लैट, गोल नहीं है. रिलेटिवली फ्लैट इसलिए लिखा हुआ है, रिलेटिवली फ्लैट. देयर आर मसल्स, ये जहां पे अटैच हैं लिगामेंट्स, जो उसमें अटैच हैं, जहां पे अटैच हैं लिगामेंट्स, देयर आर मसल व्हिच आर नोन एज सिलियरी मसल. तभी लिखा हुआ है दे आर अटैच टू द सिलियरी मसल periphery पे. So there are ciliary muscles at the attachment site of the ligaments. उन ligaments के जहां पे around the lens के सारे around में there are ciliary muscles around the वहां पे attached हैं. So the ciliary muscles are there. Contractions of the ciliary muscle, ये जो red में मैंने लिखा है, contraction of the ciliary muscles. ciliary muscle यहाँ पे हैं. Contractions of the ciliary muscle, मेरे हाथ को देखें. Contractions of these, ये दरमियान में suspensory ligaments के साथ लाइन लगा हुई, ये जरा बड़ा है, छोटा, ये suspensory ligaments ऐसे. Contractions of the ciliary muscle reduces the tension. ऐसे it reduces the tension. Ligament तो contractile नहीं होती ना, अब वो ligament है, fibers हैं. लेकिन contraction of the ciliary muscle reduces this diameter.
reduces this diameter. Contraction of the ciliary muscle reduces this diameter, so ligaments पे tension कम हो जाएगी. When tension is reduced, तो length, जैसे मैंने कहा, अगर सारे काट दो तो it is almost spherical. तो tension is reduced, length become more spherical. जितनी टेंशन कम करेंगे ज्यादा इसको, व्हेन यू कंट्रैक्ट द मसल, टेंशन इन द लिगामेंट्स इज रिड्यूस्ड. ये बात याद रखनी है आपने. Contraction of the ciliary muscle reduces the tension on the ligament because contraction causes this diameter reduction in the site. जहां पे site है वो उसका diameter कम हो जाएगा, तो उसका कम क्या होगा, ligament ढीली हो जाएंगी. ढीली होने से lens, because of its own elastic tissue, elastic fibers, it becomes more spherical, more globular. So contraction of the ciliary muscle reduces the tension in the ligament, and lens becomes more convex, more globular, more curved. Curvature increases, so refractive power increases. That's how this refractive power is increased. मैं repeat करता हूँ. For objects में there is completely relaxed ciliary muscle and there is maximum tension on the ligaments. Maximum tension on the ligament, relaxed muscle में. But when muscle contract, they cause the reduced diameter and ligaments आपस में यूं करीब आते हैं, and lens is freed from that tension. वो उसकी टेंशन थोड़ी कम होती है. It because of its elasticity, it becomes more globular, more curved, and refractive power is increased. Now this is how, this is lens front view. Front view, these are the ligaments and this is the site जहाँ पे ligaments attached, and these are the ciliary muscles. When ciliary muscles are completely relaxed form में, there is tension on the ligaments. But when these muscles contract, you can imagine this diameter will be reduced, so ligaments will be relaxed. They become more lax, ढीली पड़ जाएंगी. So this is the arrangement. That is cut section of the cut section में. This is lens, these are ligaments, this is the attachment site, and there are muscles here. Circular fibers are there and there are meridional fibers. दो किस्म के fibers हैं, but simple है, आपने याद क्या रखना है, दोनों किस्म के meridional muscle fibers और circular muscle fiber, दोनों they are ciliary muscle. Their contraction causes relaxation of these ligaments. Contraction of muscle causes reduced tension on these ligaments and lens becomes more globular. Tension जब कम होगी, lens will become more globular, flat नहीं रहेगा. So ये आगे that is ciliary muscle consists of two sets of the muscle, meridional fibers and circular fibers. Both of these sets of these muscles contract by the actions of the parasympathetic nerve. Parasympathetic oculomotor nerve का part है. That is parasympathetic fiber in the oculomotor nerve. नीचे वाली लाइन कट गई है. Parasympathetic fiber in oculomotor nerve. मैं बोल रहा हूँ ना. That is both sets of these contracted by the actions of the parasympathetic fiber present in the third cranial nerve, oculomotor nerve. उसमें मौजूद हैं, उसकी वजह से ये कंट्रैक्ट करते हैं. अब उनके कंट्रैक्शन से होता क्या है? मेरिडियनल फाइबर, they extend from the corneoscleral junction to the site of attachment of the ligaments, and contraction of these pull the attachment site anteriorly and release some of the tension. इसको देख लें, वापस चले जाएं. They are corneoscleral junction. corneoscleral junction तो ये ना, cornea and sclera का junction है, उससे extend कर रहे हैं attachment तक, ligament की attachment तक. These are the muscle, ऐसे muscle fiber है. When they contract, they pull it anteriorly. This attachment area is anteriorly, anterior वाला area is shorter. यहाँ से जब anterior pull होगा तो that is shorter, so tension on the ligaments will be reduced. So इसको anterior की तरह, ये muscle contract करके इस area को यूं anteriorly pull करेंगे तो यहाँ पे diameter कम है, तो tension will be reduced. और दूसरा मैं अभी यहाँ बयान कर रहा हूँ, the circular muscle fiber, वो sphincter like action, ऐसे circularly arranged है, ऐसे circularly arranged है. When they contract, they cause the sphincter like action and whole of the diameter is reduced, so tension on the ligaments is reduced. So contraction of meridional fiber, this causes contraction of these
pull the attachment site anteriorly and release some of the tension on the ligaments. और जो दूसरे सर्कुलर मसल फाइबर्स हैं उसका भी दैट इज स्विंक्टर लाइक एक्शन है उनका, दैट इज दे विल कॉज दी स्विंक्टर लाइक सर्कुलर मसल है, सर्कुलर ऐसे अरेंज है, जब वो कंट्रैक्ट करेंगे तो डायमीटर कम हो जाएगा, so tension on the ligaments is reduced and the lens because of its own elasticity. मसल का काम कंट्रैक्ट करके लिगामेंट्स को रिलैक्स करना है. लेंस अज्यूम्स मोर ग्लोबुलर शेप बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी. वो अपनी इलास्टिक नेचर की वजह से वो ग्लोबुलर हो जाता है. So the contraction of the ciliary muscle reduces the tension on the zanule. इसको zanule बोलते हैं. All the ligaments सबको मिलाकर zanule कह देते हैं. Zanule 70 ligaments हैं तकरीबन, इनको zanule बोलते हैं. So there is reduction on the ligament tension. So it causes the more spherical shape of the lens, more globular, more curved lens, and there is increased refractive power. उसकी 20 diopter थी 21 हो जाएगी, और आगे देखेंगे 22 हो जाएगी, और आगे देखें 23 हो जाएगी, अप टू 34. मैक्सिमम जब करीब तरीन चीज को देखेंगे 34 डायप्टर. उससे आगे भी देखने की कोशिश करेंगे, देयर इज नो फर्दर इंक्रीज इन द रिफ्रैक्टिव पावर. वो 34 है. मैक्सिमम कंट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल हैज अकर्ड. अब उसके बियॉन्ड और करीब देखना है तो इट विल बी ब्लड. इसलिए देयर इज अ नियर पॉइंट. हर आप देख सकते हैं करीब तरीन एक चीज देखें, उससे आगे लाएंगे इट विल बी आउट ऑफ फोकस. उसके इसलिए कि अब अकोमोडेशन मैक्सिमम इस्तेमाल होगी. So the increased refractive power, this is known as positive accommodation. नजदीक देखने के लिए this mechanism जो ऑपरेट करता है to see the nearer objects, increasing the refractive power, this is known as positive accommodation. और accommodation for near vision, of course this is for near vision. Near vision के लिए हमें पावरफुल लेंस चाहिए डाइवर्जिंग लाइट रेज को फोकस करने के लिए, नियर ऑब्जेक्ट की डाइवर्जिंग लाइट रेज. सो दिस इज पॉजिटिव अकोमोडेशन. और इसी तरह रिलैक्सेशन ऑफ द सिलियरी मसल विल अकर जब व्हेन वी ट्राई टू लुक एट द फार ऑब्जेक्ट्स. नजदीक देखिए, जब दूर देखने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्सली द टेंशन ऑन द ज़ान्यूल लिगामेंट्स इज इंक्रीज. क्यों? मसल रिलैक्स एंड लिगामेंट्स आर पुल्ड. ये उल्टी बात है ना, पहले ही मैंने कहा. मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेंगे डायमीटर इज रिड्यूस, जब रिलैक्स करेंगे डायमीटर इज इंक्रीज एंड लिगामेंट्स आर पुल्ड. देयर टेंशन इज इंक्रीज टेंशन ऑन द ज़ान्युलर लिगामेंट्स को बोलते हैं, सस्पेंसरी लिगामेंट बोलते हैं. सो लेस स्फेरिकल लेंस, उसकी वजह से लेंस इज अगेन बिकम फ्लैटर, लेस स्फेरिकल हो जाता है, एंड द रिफ्रैक्टिव पावर इज रिड्यूस्ड एंड द फार ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड. So this is the known as negative accommodation. ये sign negative accommodation far objects के लिए negative accommodation है. That is the withdrawal of parasympathetic impulses. नजदीक देखते हुए sympathetic parasympathetic oculomotor nerve की parasympathetic fiber stimulate होंगे और दूर देखते हुए withdraw हो जाएंगी, उनकी inhibition हो जाएगी, and the lens will become flatter and the refractive power will be reduced. This is known as negative accommodation for the far vision, दूर देखने के लिए far vision. That's how this accommodation takes place. एक चीज और ऐड होगी, खुद पढ़ लें. Pupil also constrict in the positive accommodation. नजदीक देखते हुए क्या हुआ था? पैरासिम्पथेटिक नर्व स्टिमुलेट हुई थी. कौन सी? अकुलोमोटर नर्व में पैरासिम्पथेटिक फाइबर, उसमें दूसरे सोमैटिक फाइबर भी मौजूद है. Oculomotor nerve is also involved in the movement of the muscle, contraction of the muscles of the eye. आगे हम देखेंगे उसमें सोमैटिक फाइबर भी हैं, बट दी विसरल फाइबर, पैरासिम्पथेटिक फाइबर, दे आर सप्लाइंग दी स्मूथ मसल. ये जो सिलियरी मसल हैं, दीज आर स्मूथ मसल. इनकी कंट्रक्शन तो सेम पैरासिम्पथेटिक सप्लाई जब होगी, दे आर सप्लाइंग दी कंस्ट्रिक्टर प्यूपिलरी मसल, जो आयरस के मसल हैं, आयरस के जिसमें ये प्यूपिल है, आयरस के मसल जो कंस्ट्रिक्टर प्यूपिल, सर्कुलर मसल जो हैं, रेडियल मसल्स आर सप्लाइड बाय द पैरासिम्पथेटिक एंड सर्कुलर मसल्स इन द आयरस आर सप्लाइड बाय द रेडियल मसल्स आर सप्लाइड बाय द सिम्पथेटिक नर्व एंड सर्कुलर मसल्स आर सप्लाइड बाय दिस पैरासिम्पथेटिक नर्व. तो जब वो स्टिमुलेट हो रही है तो सर्कुलर मसल्स ऑफ द आयरस दे आल्सो कंस्ट्रिक्ट, वो भी कंट्रैक्ट करते हैं. उनसे कंट्रैक्शन से देयर इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द प्यूपिल एज वेल. इसको याद रखें. इसको हम एकोमोडेशन पावर के, एकोमोडेशन रिफ्लेक्स के नाम पे आगे भी डिस्कस करेंगे.
Accommodation reflex is the constriction of the pupil when the person looks at the near objects. Accommodation को हम we can't see the lens. अगर अकोमोडेट कर रहे हैं तो हम तो लेंस को नहीं देख पा रहे. सस्पेंसरी लिगामेंट्स भी वी कांट सी. सस्पेंसरी कंट्रैक्शन ऑफ द सिलियरी मसल वी कांट सी. बट वन थिंग वी कैन सी इज व्हेन द पर्सन इज अकोमोडेटिंग फॉर द नियर ऑब्जेक्ट्स, दैट इज कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल. Constriction of the pupil also takes place along with it. So this constriction of the pupil is known as accommodation reflex. What is accommodation reflex? Constriction of the pupil when the person looks the nearer objects. ये क्यों होती है कि नियरर ऑब्जेक्ट्स के लिए पॉजिटिव अकोमोडेशन, पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन अकर्स एंड दैट पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन आल्सो कॉजेज द कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल एज. तो ये बात भी साथ साथ होती है. सो दिस कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, जो उसका काम तो कुछ और है. कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पीपल, इट कंस्ट्रिक्शन एंड डायलेटेशन ऑफ द पीपल, दिस कंट्रोल द अमाउंट ऑफ द लाइट. कुछ उसका व्यू इलेक्ट्रिसिटी में रोल है, बट अमाउंट ऑफ द लाइट प्राइमरीली दैट इज कंसर्न विद द अमाउंट ऑफ द लाइट एंटरिंग इनटू द आईज. तो कंस्ट्रिक्शन में अमाउंट ऑफ द लाइट रिड्यूस करती है. उसका मैकेनिज्म आगे बात करेंगे, लेकिन होती है व्हेन accommodation for the near constriction of the pupil occur, and this is known as constriction of the pupil is known as accommodation reflex. वरना बाकी कोई चीज accommodation की अपनी बात तो कोई नजर ही नहीं आती ना हमें. We can't see the lens, we can't see the suspensory ligaments, we can't see the ciliary muscle, etc. Diameter कम होते हैं, we can't see. Only thing we can see is the constriction of the pupil. So constriction of the pupil also occurs. This is known as accommodation reflex. Accommodation reflex है. Mechanism of accommodation में ये बात हमने कर ली है, दोबारा डायग्राम वो आगे. That is contraction of these sets of muscle releases the tension and this becomes globular and this is positive accommodation. दूर देखने के लिए muscle relax and ये फिर pull हो जाती हैं, lens flat हो जाता है, और this is negative accommodation. So accommodation is the because of the इलास्टिक नेचर ऑफ द लेंस स्ट्रक्चर. उसका कैप्सूल इलास्टिक फाइबर का बना हुआ है. बट विद द एडवांसिंग एज, और टोटल रिफ्रैक्टिव पावर भी हमने कहा बिकॉज ऑफ दिस 14 डायोप्टर यंग आई में ये हो सकता है, इट कैन प्रोवाइड. बट विद द एडवांसिंग एज, दिस denaturation of the lens protein and capsule of the lens proteins that causes normal accommodation power 14 diopter हमने देख लिया है, but advancing age causes denaturation of the lens protein. उसके डीनेचर होने से देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस. इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी तो क्या फर्क कर, पूरी खत्म कर दें तो जिस शेप का है वैसी शेप का होगा. टेंशन काट भी दें तो वो ग्लोबुलर वो बाल नहीं बनेगा. इलास्टिसिटी खत्म हो गई. तो विद द एडवांसिंग एज दिस इलास्टिसिटी इज ग्रेजुअली रिड्यूस्ड. या लॉस लिखा हुआ है रिड्यूस्ड, लेकिन और बढ़ते बढ़ते इट कैन कंप्लीटली बी लॉस्ट, खत्म भी हो सकती है. सो देयर इज लॉस ऑफ इलास्टिसिटी, ग्रेजुअल लॉस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द लेंस. एंड लेंस जब पूरी इलास्टिसिटी खत्म हो जाए, देन द लेंस कैन नो मोर कैन चेंज इट्स कर्वेचर. जब इलास्टिसिटी खत्म हो गई तो ये इट वाज अज्यूमिंग द मोर स्फेरिकल शेप बिकॉज ऑफ इट्स इलास्टिक नेचर. जब इलास्टिसिटी खत्म हो गई जी तो आप लिगामेंट्स काट भी दें तो इट विल रिमेन उसी शेप का रहेगा. सो इट कैन नॉट चेंज इट्स कर्वेचर, सो इट कैन नॉट इंक्रीज और डिक्रीज इट्स रिफ्रैक्टिव पावर. इसका क्या मतलब है, एक फिक्स पॉइंट पे ये फिक्स हो जाएगा, फोकस हो जाएगा. सो accommodation पावर इज रिड्यूस और लॉस्ट. अगर थोड़ा कम हुआ है 14 डायोप्टर से, जैसे मैंने कहा 12 डायोप्टर हो गए, 10 हो जाए, 8 हो जाए, 2 हो जाए, 0 हो जाए, तो इट इज बीइंग रिड्यूस्ड. सो रिफ्रैक्टिव पावर की इस रिडक्शन को हम प्रेसबायोपिया बोलते हैं, लॉस ऑफ accommodation. Accommodation का कम होना या खत्म हो जाना, that is known as presbyopia because of the denaturation of the protein because of aging process. So lens has fixed refractive power. कि उससे ज्यादा ग्लोबुलर भी नहीं हो सकता, फ्लैट भी नहीं हो सकता, जो शेप रह गई है उतनी रह गई. तो एक जगह पे फोकस है तो उससे करीब देखना होगा, इट कैन नॉट एज्यूम मोर स्फेरिकल शेप. उससे दूर देखना होगा, इट कैन नॉट एज्यूम मोर फ्लैट शेप एज वेल. एक फिक्स शेप का हो गया. तो इसका नतीजा क्या होगा, नजदीक देखते हुए भी ब्लड एक खास जगह पे तो बड़ा अच्छा नजर आएगा, उससे अगर दूर देखेंगे तब भी पॉसिबल है कि उसको अच्छा नजर ना आए.
या दूर की चीजें नजर आ नजदीक की नजर नहीं आएंगी, बिल्कुल आउट ऑफ फोकस होंगी। तो उसको लिए क्या करना पड़ेगा? तो दूर के लिए नेगेटिव लेंस देना पड़ेगा, कम करनी है। दूर देखने के लिए वी नीड रिड्यूस रिफ्रैक्टिव पावर, तो वी विल नीड रिड्यूस रिफ्रैक्टिव पावर वाले लेंसेज, वो कनकेव लेंसेज होते हैं, डाइवर्जिंग लेंसेज होते हैं। ये इंक्रीज रिफ्रैक्टिव पावर वाज बिकॉज ऑफ मोर कन्वर्जिंग लेंस, more very the convex lens, it was causing the increase। और उसके दूर देखने के लिए more flat lens, या इसको भी और भी कम करना है तो then converging lens हमें चाहिए होगा दूर देखने के लिए। और नजदीक देखने के लिए lens, crystalline lens cannot increase its refractive power, we will have to increase with this lens, we will have to give lens, so we will give two types of lenses, that is for near vision of converging lens or convex lens or positive lens, and dur ke liye we will need a negative lens। So lens is fixed refractive power, and this is known as presbyopia, and it is corrected by use of bifocal lenses, corrected by the bifocal lenses। I don't know कितना clearly focused हूँ मैं। I am using bifocal lenses, this is upper end is negative lens, और इससे नीचे ये लाइन के नीचे जी नजदीक देखना हो तो ये लेंस इस्तेमाल करता हूँ, दूर देखना हो तो ऊपर वाला लेंस इस्तेमाल। दिस इज bifocal glasses I am wearing, मैं मूव करके देखता हूँ, पता नहीं आपको कितना क्लियर नजर आ सकता है कैमरे में, लेकिन यू मस्ट हैव सीन पीपल, आपके ग्रैंड बूढ़े लोगों को देखा होगा कि उसमें दो लेंस लगे होते हैं इस आई में। तो मैं ये मूव करके दिखाता हूँ, देयर इज वन लेंस, दिस इज एंड अपर लेंस, this is the with advancing age this presbyopia occurs, and that is corrected by the use of bifocal lenses। So that was about the accommodation mechanism हमने डिस्कस किया। तो we stop here, accommodation and mechanism of accommodation। तो next हम बात करेंगे एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये एक ऐनक तो पहनते हैं बूढ़े लोग जो बाइफोकल लेंसेज प्रेसबायोपिया के लिए पहनते हैं, जैसे मैंने पहनी हुई है, लेकिन यंग लोग भी पहनते हैं ऐनक, उनको तो प्रेसबायोपिया नहीं होता ना, उनमें भी कोई रिफ्रैक्शन की खराबी होती है, जिसको हम टर्म करते हैं एज एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन। ये प्रेसबायोपिया भी एक किस्म की रिफ्रैक्शन खराब हो जाती है, यानी दूर और नजदीक की रिफ्रैक्शन जो नॉर्मल होती है वो निजाम एक्चुअली मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन खत्म हो जाता है, लेकिन होता तो यही है कि रिफ्रैक्टिव पावर ठीक नहीं है, तो उसको ठीक करने के लिए लेंस इस्तेमाल करने पड़ते हैं, दूर के लिए नेगेटिव लेंस और प्रेसबायोपिया के लिए। लेकिन इसके अलावा भी रिफ्रैक्टिव एरर्स हैं, यानी लेंस की एकोमोडेशन ठीक भी हो, इवन देन रिफ्रैक्शन में बी समथिंग रॉन्ग विद द रिफ्रैक्शन, वी टर्म एज द एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन, उसको हम कहते हैं। 3 किस्म के एरर्स ऑफ रिफ्रैक्शन हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तो इंशाल्लाह ताला। तो इसको जैसे मैं कहता हूँ, थैंक यू वेरी मच, इसको आप शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें, और होप टू सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।